हेलो दोस्तों, चेक पॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ VSX। राइट। डिप्लॉयमेंट ऑफ VSX। लाइक पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है VSX होता क्या है, इसका पर्पस क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, लाइक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको करनी है देन व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। तो as I told you earlier कि there is a condition that if you want to deploy VSX, your deployment should be in distributed model. It should not be a standalone firewall. So मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट्स से मैंने ये दो चेक पॉइंट के डिवाइसेस लिए हैं. This will be our security gateway and this is our management server, right? Now further on this security gateway, actually it will we will use it as a VSX gateway, right? VSX gateway, and here we will be configuring two virtual systems. Let's say one virtual system and another virtual system. This E2 is going to be a shared interface between these two, and E1 and E3, these are individual interfaces. So this will be part of uh, VSX1 and virtual system 2, right? Okay. I mean, what I can do, I can show you like this. Let's go to here. Yeah. So if let's say this is our VSX gateway, so we will be configuring here two virtual systems, one and two. Okay. This is virtual system one and virtual system two. This interface E1 I will allocate to VSX1, E3 to VSX2. So E1 will be part of VSX1, E3 will be part of VSX2, and this one is a shared interface. E2 is a shared interface. Okay. So this is how our deployment will be. ऐसे डिप्लॉय हम करने वाले हैं. उसके बाद फिर हम देखेंगे पॉलिसीज वगैरह, राइट. तो अभी देखो मैंने क्या किया हुआ है इस सेटअप में. मैंने ऑलरेडी इन दोनों ही डिवाइसेस को इनिशियलाइज कर दिया है. आई मीन VSX की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है. दिस बॉक्स हैज बीन इनिशियलाइज्ड एज अ मैनेजमेंट सर्वर एंड दिस बॉक्स हैज बीन इनिशियलाइज्ड एज अ सिक्योरिटी गेटवे. सिंपल. ये इनिशियलाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है, राइट. हमने कई लेक्चर्स में ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है. तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम चलते हैं अपने मैनेजमेंट सर्वर पर. ठीक है. इसकी आईपी ये है एंड जो हमारा VSX है इसकी मैनेजमेंट आईपी है 192.168.1.1.3. ठीक है. तो चलते हैं अपने गेटवे पे, सॉरी मैनेजमेंट सर्वर पे. ठीक है. अब मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, देखो आइडियली हम क्या करते थे कि गेटवे ऐड करते थे, राइट. इस पे क्लिक करके हम गेटवे ऐड करते थे, राइट. गेटवे पे क्लिक. बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे क्लस्टर के बाद VSX पे. ओके. एंड यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं गेटवे. ठीक है. तो विल क्लिक ऑन गेटवे. नाउ इट इज आस्किंग फॉर एंटर दी VSX गेटवे नेम. लेट्स से मैंने दे दिया VSX CP गेटवे. ओके. आप कोई भी नेम दे सकते हो. देन IPv4 address that is going to be 192.168.101.3, right. Then IPv6 address we are not using it at all. It's fine. Then VSX gateway version, it's RAT.10. Next. Now it is asking, do you have any shared interfaces or do you have separate interface or custom? So these things you don't need to really worry about, क्योंकि ये चीजें आप बाद में भी चेंज कर सकते हो. लेट्स से अभी मैंने सेपरेट इंटरफेस कर दिया, बाद में मेरे को एक शेयर्ड इंटरफेस रखना है, तो वो चीज आप बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हो, राइट. सो लेट्स से हियर नेक्स्ट. नाउ इट इज आस्किंग फॉर एक्टिवेशन की. तो जब मैंने अपना ये क्या कहते हैं गेटवे इनिशियलाइज किया था, तो वहां पे मैंने एक्टिवेशन की दी थी.
cisco@123. So that's the same key I'm gonna use here, capital CISCO@123. Now we will see initialize, and it is saying trust established, means our communication, this SIG communication is successful. So let's say next. Now it is asking physical interfaces that you want to use as VLAN trunk. Again, this setting you can also change after this, after completing this wizard. Okay, so let me say here next. Select the interface which will be used by all virtual systems for external communication. ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया अपना V2. It's kind of, it is asking for outside interface. Select the interface which will be used by all virtual systems for external communication. तो लेट्स से मैंने यूज कर लिया V. Next. Now it is asking define policy rules for VSX gateway. Policy rules in the sense कि पूरी डिवाइस को मैनेज करने के लिए, गेटवे मैनेजमेंट के लिए आप कौन कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हो। तो बी के लिए मैंने लिख दिया है एनी एनी, इसको लास्ट वाले पे क्लिक हो रखा है, देखो एनी एनी। सो लेट्स कीप एवरीथिंग अलाउड। अदरवाइज अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक सोर्स दे सकते हो एंड स्पेसिफिक सर्विस अलाउ कर सकते हो। लेट मी कीप इट एनी एनी। न्यू सोर्स ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ से बना सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सोर्स से अलाउ करना है। नेक्स्ट, you have allowed services set to any, are you sure? Yes. Now it is finalizing the VSX gateway creation and click on finish. So it will take some time here, few minutes, and then your VSX gateway would be ready. Once our VSX gateway is ready, then we will configure virtual systems. के बाद हम बनाएंगे क्या, virtual systems. तो वेट करते हैं, इसको रेडी होने देते हैं पहले, then we will see how to configure virtual system. एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको इन टर्म्स ऑफ ब्लेड्स, अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी यूज करनी है वर्चुअल सिस्टम में, तो सेम ब्लेड मस्ट बी इनेबल्ड इन VSX गेटवे, राइट। लाइक यहाँ पे अब लेट्स से आपको यहाँ पे फायरवॉल एंड IPS के फीचर यूज करने हैं, और यहाँ पे फायरवॉल एंड लेट्स से IPsec VPN के फीचर्स यूज करने हैं, राइट। तो आपका ये जो VSX गेटवे, आपको उस पर 3 ब्लेड इनेबल करने पड़ेंगे, फायरवॉल, IPS intrusion prevention and IPsec। अंडरस्टूड। तो मेन जो आपका बेस डिवाइस है उस पे, या वी कैन से कि जो आपका नेटिव डिवाइस है उस पे आपका वो ब्लेड इनेबल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन लिवरेज दैट ऑन दिस वर्चुअल सिस्टम। ठीक है। मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग, एज सुन एज इट विल बी रेडी आई विल रिज्यूम। ये प्रोग्रेस हो ही रहा है, चल रहा है इस पे। ओके, सिम्स इट इज सक्सेसफुल, राइट। व्यू रिपोर्ट, ठीक है, ये आपका हो गया सक्सेसफुल। अपॉन क्लोजिंग दिस विजार्ड लॉन्च न्यू सिस्टम विजार्ड। ठीक है, वो सब छोड़ दो, क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका एक देखो, ये VSX बन चुका है, राइट। एंड
पे हम कुछ प्लेट्स इनेबल कर लेते हैं लाइक, वैसे अभी हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम बेसिकली अपने फायरवॉल वाले फीचर से यूज़ करके देखेंगे, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर वर्चुअल सिस्टम्स, राइट। क्योंकि हमने ये तो बना लिया अपना, क्या कहते हैं, वर्चुअल VSX गेटवे बना लिया, राइट। अब हमें क्या बनाने हैं, वर्चुअल सिस्टम्स। तो अभी देखो आपका, जब एज सुन एज वी एडेड दिस वर्चुअल VSX gateway, virtual switch is by default there, right? This switch is there. And once I'm trying to double click on this, it is simply saying it is an external virtual switch and will be shown in read only mode. You cannot modify this, okay? You can just see कि कौन कौन से इंटरफेस हैं इसमें। अब E2 को मैंने शेयर्ड इंटरफेस बनाया था, दैट्स व्हाई आई मीन E2 को मैंने एक्सटर्नल बनाया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है, अभी कोई इंटरफेस एलोकेट हुए नहीं है, राइट। तो लेट मी डू दिस, लेट मी क्रिएट टू वर्चुअल सिस्टम्स। तो आप इस पर क्लिक करोगे एंड हेयर विल गो टू VSX वर्चुअल सिस्टम। अगर आपको राउटर बनाना है देन राउटर, स्विच बनाना है देन स्विच, बट हमें बनाने हैं दो वर्चुअल सिस्टम। क्लिक ऑन इट, नेम दे दो, लेट्स से VSX1, V सिस्टम 1। यहाँ पे अपना गेटवे सेलेक्ट करोगे आप, ब्रिज मोड में अगर रखना है आपको, लाइक ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, बट हमें लेयर 3 मोड में ही रखना है। नेक्स्ट, शेयर्ड इंटरफेस E2 रहेगा, पर आईपी एड्रेस आपको क्या देना है। तो लेट्स से मुझे E2 पे आईपी एड्रेस क्या रखना है, लेट मी सी इफ आई हैव got it. So here, let's say we are keeping IP address as 172.16 1.2. Again, VSX 1 में और 2 में आप अलग अलग IP एड्रेस रख सकते हो, ओके। तो 172.16 1.2, let's go here, 172.16.1.2 mask, डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, डिफॉल्ट गेटवे 172.16.1.1। IPv6 नहीं कॉन्फ़िगर करना है, इंटरनल अगर आपको इंटरफेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, हाँ बिल्कुल करना है हमें, एंड दैट इज गोइंग टू बी E1। सो लेट कॉन्फ़िगर इट। आईपी एड्रेस क्या देना है, लेट्स से हमें इस पे अपनी टोपोलॉजी देखते हैं। आईपी एड्रेस शुड बी 10.1.1.2, mask 255.255.255.0, डन। नेक्स्ट, ये अपने कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल सिस्टम बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपका एक वर्चुअल सिस्टम बन गया है। सिमिलरली वी विल कॉन्फ़िगर वन मोर वर्चुअल सिस्टम, दैट विल बी VSys2। क्लिक ऑन इट, न्यू वर्चुअल सिस्टम, नेम लेट्स से मैंने दे दिया VSys2, गेटवे दिस वन। फिर इंटरफेस पे आईपी क्या रखनी है, लेट्स से 172.16, लेट अस सी, डॉट 1.16.1.2।
10.2.2.1. Sorry, going to be 10.2.2.2. It's done. So let's say close. All right. So all are green means everything is working perfectly fine. Now, so as you see here, only one firewall blade is enabled here. So here also we have only these two options, right? So for example, we are trying to enable this blade on this VSX. Double click, and I'm trying to enable, let's say, this blade. Let's say this one. Okay. Let's say URL this one. URL filtering. Okay. So it is checking communication with the VSX. So ideally it should prompt us an error that because this blade is not enabled in VSX, so it should not be checking connection with VSX is up to date, virtual processing complete successfully. Okay, close. See, it's not working. We were able to enable it, but it's not working because this blade is not enabled on this VSX gateway itself, right? So on the parent device, on the base device, there must be that same blade must be enabled, right? So it's not gonna work. So let's disable it. All right. Now, let's try to configure some policies. So let's say we will be configuring very limited testing policies. Let's say in this VSX, I want to allow, let's say, TCP traffic. And here, let's say I want to allow ICMP traffic, right? So whenever we will configure the policy, it would be installed on this virtual system itself, not on the VSX gateway. The policy will be installed on this virtual system. So we can say these are ideally two firewalls, two separate firewalls, right? Virtually, these are two independent firewalls where we can configure independent net policy, firewall policy, VPN stuff, right? Okay. Now let me show you how to do this. So let's go to security policy, and here we will be configuring a rule.
let's say rule for VS system 1. Here I want to outsource any definition, any service, TCP, right? Okay, so I mean, cannot be generic TCP, it has to be some specific service. So let's keep it like telnet, for example. Action is if track will generate a log, install policy. So here you see we are getting options VSS like virtual system 1 and virtual system 2. Let's say this policy is for virtual system 1. I want to install it on virtual system 1. Then one more policy will configure for ICMP traffic. VSS. Okay. Towards any destination, any, it's fine. I want to allow ICMP traffic. Now, this I want to install on VSX. Then this cleanup rule like deny any. This is I want something I want to deploy on VSX 1 into both. Cleanup rule for both. Okay. So now let's publish these changes and install policy. ओके, ये पॉलिसीज इंस्टॉल हो रही हैं। मीनवाइल हम क्या करते हैं अपनी राउटर्स की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं वेदर दे हैव आईपी एड्रेस और नॉट वेरिफिकेशन के लिए, राइट? तो R4 चेक कर लेते हैं पहले। R4 पर आईपी एड्रेस इज देयर, डिफॉल्ट गेटवे इज देयर, फाइन। router, so this is not configured, so I will configure IP address and the default gateway. So host name, let's say RLN. And now let me check this router. Okay, so if you see the installation is successful, right? So now we'll verify. Just wait, let me configure this router first. Next port will be 172.16.1. Right, so because this is part of VSX1,
So only telnet would be allowed. This is part of VSX2, so only ICMP would be allowed. So let's try it. So from R4, ping should not work to 172.16.1.1. It's not working, right? And if uh, we will try telnet, it should be working. So let's say telnet 172.16.1.1. It's working, right? Perfect. Now, if you try from another router, that is RIN, so if we go to RIN, ping should be working perfectly fine. Ping is working fine. However, telnet or any other traffic is not allowed. Okay. Now, because I have not enabled logging on this cleanup rule, so I won't be able to show you the logs. But for the traffic that is permitted, logs must be there. So you see, I tried the telnet, it's working. Access rule name, okay. Origin, this is one. And if you check another one, so echo request is allowed, right? I tried 2 times. Origin is VSS. Now let me show you something over here on the CLI. If you want to see the status on CLI, then how can we check that? So admin123 show VSX. Okay. If you see here, it is showing -0. It means we are in kind of admin VSX, or this is the base system. VSX, so VSX systems. So VSX config, the command there. Okay, 1 minute. This is also showing the warp link that is between the virtual system and virtual switch. Uh, One thing. Okay, just 1 minute. So let's go through this and here. So virtual system. Yeah, this is the command actually. Virtual system all. Yep. Here it is going to show us that okay, these are the virtual systems we have, right? 0 is the default one, kind of admin contact. This one, the virtual switch. This one, VSys2 and VSys3 that we created, right? If we want to set virtual system two, if you want to go inside two, then you are now we are in two. So interfaces all. It one IPv4.
Similarly, if you want to move inside 3, press set to BSID 3. So virtual system all. If you want to come back to 0 system, so now we are back to 0. All right, now so basically this virtual switch is showing two warp links, right? One is with the VSS2, virtual system 2 and virtual system 3. E2 is the shared interface, so it's gonna be here. Nothing else you can do here. This is just in read only. Okay, and remaining things I have already shown you. Like I tried enabling URL filtering blade, but that didn't work here. So let me do this. If you want to really use it, you have to enable it on the base machine first. Let's say URL filtering and application control. If you enable both of these here, then you can use these in virtual systems. So now if you go to your VS, we are getting some error. Your filters is not responding. It will work here. Just wait for some time maybe. So now in this VS system, we can enable URL filtering, and then another one we can enable application, right? So whatever blades you want to use in virtual system, they must be enabled in your VSX gateway. Showing here some issue. Let's wait for some time and let us see. It should be green. All right. So somehow actually it was not. I waited for some time, but it was not coming up with this URL and application filtering blades. So I disabled those blades. Let's try with this IPS, anti-bot, and antivirus. Let us see whether this will work or not. Since it is working, so on this system one, let's enable only IPS, and on no, it's still not working here. Also, it's giving some error. So maybe this device itself has some issues. License is available, but let's keep it disabled. Somehow these blades are not working, but the concept is same. So if you want to use any of the blade on virtual systems, it has to be enabled on virtual
VSX gateway, right? Simple. And if you want to delete, yeah, any of this virtual system, you just need to right click and there is an option of delete. Use when another object. Okay, actually this policy is configured, right? That's why it is not getting deleted. So let's go to our policies and I'm gonna delete the policy. And here from cleanup rule also, I'm gonna remove this vsystem1. Okay, now let's publish. Now I will try to delete. Should be deleted. Okay. All right. Talking about the traffic flow here. As soon as the traffic hits the VSX gateway, all of the first is going to determine the context. Like this interface belongs to which virtual system? It belongs to virtual system 1. So it will check the security policies that are configured for virtual system 1 and then forward into destination if allowed, right? So these are the, we can say these are the steps for V6 traffic flow. And yeah, I think that should be, that's all for this VSX implementation. Okay, so thank you and see you in next video.